Welcome back, dear students of class 11th. Let's complete the last two stanzas of childhood. See in the last video, the first video on this very particular poem, when I was actually explaining the second stanza of the poem. Unfortunately, some technical just a glitch just occurred, and because of that I couldn't explain the last two lines of this poem. But in the last two lines of this poem, actually the poet wants to tell us about the hypocrisy of the grown-up people. That the grown-up people look very different. They just particularly in the childhood, particularly for a child, how do they talk? They talk always, they talk of good things, they talk about this, they talk about that, they always lecture that one and all should be should be good to one and all. One should not exercise discrimination. Why? Because we end up getting nothing by by exercising discrimination. But they actually never exercise. They never exercise something that is good. They never do something that is good. Now let's look at the last two stanzas of this very particular poem. So my dear learners, कल जब मैं आपको पोम की लास्ट टू लाइन्स को, उस स्टैंजा की प्रोबेबली सेकेंड स्टैंजा की लास्ट दो लाइन को एक्सप्लेन कर रहा था, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण शायद मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो मैं उन पोम की जो लास्ट दो लाइन हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। उसमें क्या होता है एक्चुअली कि पोएट कहता है कि ग्रोन अप पीपल जो हैं वो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, वो हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में लेक्चर देते हैं, लेकिन वो कभी उन चीज़ों को एक्सरसाइज नहीं करते, कभी वो अच्छा करते नहीं। इस तरह से वो कहना चाहता है कि दे आर हिपोक्रेट। वहाँ पे वो दिखाता है कि वो कितने वो हिपोक्रेट है। अब आइए हम पोम की जो बची हुई जो स्टैंजाज हैं या जो लाइन है उनको हम देखते हैं और उनको समझते हैं। When did my childhood go? फिर देखिए वही लाइन में पोएट जो है दोहरा रहा है, यानी कि वो कह रहा है When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? Was it when I found my mind was really mine? कह रहा है क्या तब ऐसा, क्या was it, क्या ये तब हुआ? When जब I found मैंने पाया, my mind मेरा दिमाग, was really mine कि मेरा दिमाग मेरा है। To use whichever way I chose कि मैं to use मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। whichever way means किसी भी तरीके से I chose, जो मैं पसंद करूं। तो कह रहा है कि जिस दिन मुझे ये पता चला कि यहाँ पे देखिए वो बात करना अपनी रैशनैलिटी, अपनी रैशनल फैकल्टी ऑफ द माइंड, या रैशनल फैकल्टी नहीं कह सकते इंडिविजुअलिटी। द डे ही रियलाइज्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, the day he realized that he was an individual being and he was different from others and he was whole and soul, the master of his own body, the master of his own brain. He could think the way he pleased or loved. He could do the way he actually loved or pleased. Whatever way he wanted actually to think, he could think. He says that the day I realized my individuality, or the day I realized my mental faculty, my power, that day probably was the day I lost my childhood. तो कह रहा शायद जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा जो दिमाग है ये मेरा अपना है, I am the whole and soul owner of this very particular brain or mind, and I'm free to think in whatever way I love to think. I have my own perception, I have my own way of thinking and pondering, and
No one can force me to think this way or that way, but I'm free to think in whatsoever way I please or love. तो कह रहा शायद जिस दिन उसे इस अपनी इंडिविजुअलिटी का पता चला, शायद वो दिन था उसने अपने बचपन को खो दिया. His childhood went away from him forever. आइए अगली लाइन देखते हैं. Producing thoughts that were not thoughts of other people. तो कह रहा है कि जिस दिन शायद मैंने ये समझा कि जो मेरा जो दिमाग है ये क्या है, प्रोड्यूसिंग थॉट्स, ये विचारों को प्रोड्यूस करता है, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर, जो दूसरे लोगों के नहीं हैं, जो मेरे हैं, बट माइन ओन, जो सिर्फ मेरे हैं, एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे. देखिए माइन ओन का वही मतलब एंड माइन अलोन का भी वही मतलब, लेकिन वो क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए उसे दो बार एक ही चीज को कह रहा है थोड़ा सा अलग ढंग से. तो कह रहा है कि जिस दिन उसे ये पता चला, जिस दिन उसे ये रियलाइज हुआ कि इसका ब्रेन इसका है, इसकी फंक्शनैलिटी टोटल इसके कंट्रोल में है, जिस तरीके से चाहे whatever way he chose to think, he chose to ponder, he could, he can. जिस दिन उसे ये पता चला कि वो जिस तरीके से चाहे सोच सकता है, जो सोचेगा, जो भी विचार वो सोचेगा या जो भी सोचेगा वो उसका अपना होगा, वो दूसरों का नहीं होगा. जिस दिन उसकी ये इंडिविजुअलिटी की समझ हुई, उस दिन शायद ये कह रहा है कि शायद दैट डे आई लॉस्ट माय चाइल्डहुड, कह रहा शायद उस दिन मैंने अपने बचपन को खो दिया. तो माय डियर लर्नर्स, यहां जो है ओम का ये स्टैंजा भी खत्म होता है. एक बार इसमें हम जो है फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं. क्या कोई फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है? When did my childhood go? Was, यहाँ पे तो देख लीजिए लाइन रिपीट कर रही है ओम में बार बार माय डियर लर्नर्स. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये माय डियर एग्जाम्पल हो गया रेफरेन, REFREIN. ये रेफरेन का हो गया, repetition of same line, holding the key point or central idea of the poem is called refrain. अब यहाँ देख लेते इसको. Was it, देखिए was भी W से, when भी W से, फिर यहाँ देखिए was, फिर यहाँ पर तो देखिए इस poem में फिर यहाँ देखिए my mind, तो यहाँ पे देखिए was when में W का साउंड रिपीट हो रहा है, my mind में M का साउंड रिपीट हो रहा है, फिर was में, फिर यहाँ देखिए mind में जो है M का साउंड रिपीट हो रहा है. यानी कि दिस लाइन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन. ये लाइन में एलिटरेशन फिर यूज हुआ है. अब अगला देखते हैं. टू यूज विच एवर वे आई चोज, तो देखिए विच भी W से, विच एवर भी और वे भी, तो फिर एलिटरेशन यूज हो रहा है. प्रोड्यूसिंग थॉट्स, देखिए थॉट्स, फिर देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसिंग थॉट्स T से, दैट T से, फिर दोज T से, यानी कि फिर एलिटरेशन. और एक बार ये भी आप देख सकते हैं थॉट में O का साउंड, तो O का साउंड, फिर नो O का साउंड, फिर दोज में O का साउंड, फिर अदर O का साउंड, पीपल में नहीं है. तो देखिए यहाँ पे O का साउंड भी रिपीट कर रहा है, यानी कि एसोनेंस, ASSONANC, एसोनेंस का यूज किया गया है. बट माइन ओन एंड माइन अलोन, यानी कि माइन फिर माइन या फिर माइन, यानी कि फिर से रेपिटेशन ऑफ द सर्टेन साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव वर्ड, इट मींस एलिटरेशन. तो यहाँ माय डियर लर्नर्स, यहाँ पर पोम का ये जो है अगला स्टैंजा खत्म हो गया है, और आई होप आपको ये पोम का ये स्टैंजा क्लियर है. अब अगला देखते हैं. इस यहाँ से वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर देखिए ये दो लाइन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेफरेन. तो फिर रेफरेन, फिर वो पूछ रहा है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो,
कि मेरा बचपन कहाँ गया. Very philosophical. This stanza is, it went to some forgotten place. कह रहा है it went, वो चला गया, to some forgotten place, एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद मैं भूल चुका हूँ. That's hidden in an infant's face. Very philosophical line. कह रहा है that means his childhood, उसका बचपन, is hidden, छुपा हुआ है, in an infant. Infant का मतलब होता है newly born child, एक नवजात छोटा सा बच्चा. फेस कह रहा है कि मेरा बचपन, दैट आया है इसके बचपन के लिए, कह रहा है दैट्स बचपन के लिए, कह रहा है दैट्स हिडन, वो छुपा है, इन एन इन्फेंट फेस, वो एक बच्चे के चेहरे में छुपा है. दैट्स ऑल आई नो, कह रहा मैं यही जानता हूँ, यही मुझे पता है. तो देखिए पोम की कंक्लूडिंग लाइन में वो कह रहा है, पहले तो वो कह रहा है कि क्या, देखिए Where did my childhood go? कह रहा है Where has my childhood gone? मेरा बचपन कहाँ गया? या Where did my childhood go? He says it's gone to some forgotten place. He says that his childhood has gone to probably a certain place he has forgotten. He says that his childhood has gone to that very particular place he has no idea, or he cannot remember. He cannot remember that very particular place his childhood has gone forever. But in the next line, or the second line of the poem, he said that no, he knows. That's hidden in the face of an infant. Means the childhood is in the face of the infant. Now he says that as long as one is infant, as long as one is childhood, one has one's own childhood. The moment one grows in age, grows in maturity, grows in knowledge, that very particular person goes far away, or leaves far behind his childhood. In the same manner, when the poet, the speaker of the poem, grew in age, grew in maturity, grew in knowledge, at the same time he was leaving behind his childhood. And a time came, he realized, he felt that his perception of the world was absolutely different. The people of the world all around him, absolutely different. They were no longer as good as they looked, or as they actually professed. They were hypocrite. But he concludes the poem by saying that he knows. He concludes the poem by saying that as long as one is child, one is infant, one has one's own childhood. But the more that child grows in age, maturity, knowledge and understanding and rationality, that child leaves behind him his childhood. That blessing in disguise, that wonderful stage or phase of human life. That's it in this very particular video, my dear learners. Before I go, I will make a personal appeal to one and all. Please do follow me and subscribe my channel. I can assure you one thing, that I will always give you something different in comparison with all other study content available on this, you can say this,
on this platform that is YouTube. Once again, thanks my dear learners.